So today's topic is role and relevance of cultivation of emotion in a spiritual domain. That is आध्यात्मिक क्षेत्र में भावना की भूमिका और इसकी प्रासंगिकता. So that is the subject we have chosen today. So emotion, if you come, emotion plays a significant role in spirituality, and their role can vary depending on the specific spiritual beliefs and practices of individual or religious traditions. Here are some ways. For example, if you go by the connection and devotion, so the emotions such as love, reverence, and devotion often underline spiritual experiences. People may feel a deep emotional connection to a higher power, divine power, or a spiritual entity. So these emotional connections can serve as a source of inspiration and motivation for spiritual practices. And in nutshell, I would like to say what is spirituality, because these are the two topics we are going to discuss. So in simple terms, in simple words, what we have to do is to return home from where we came. And we have all come from Paramapurusha, the Supreme Entity, and from the Prana Kendra, the nucleus of the universe, that is Purushottama. So we have to return to the same place. It is like a boy who is playing throughout the days away in the field, and now that evening has come and returns home. So sadhana is the process of returning home. Spirituality is the process returning home. So the child has played outside for the whole day. As evening approaches, he thinks father must have returned home. So let me also return home and sit next to him. So when one is tired of this world and worldliness, one yearns to go back to spirituality, that is to one's home. So with this small brief, I would like to start this session, and I'll request any of you to raise your hands. But before, may I request Dada Haranand to please start the subject so that people get connected and then they feel to participate. Thank you, Dada. Thank you very much. Namaskar. Let me start with the incident which took place right before the Battle of Kurukshetra. As we have learned from the Bhagavad Gita, what happened when Arjuna and the entire Pandava army and army of Kauravas was ready for the battle. Suddenly, an emotional contagion, emotional wildfire took over Arjuna, and he started shivering. His mouth, he could not speak, he could not fight. He kept his bow and arrow, and then he told Lord Krishna that I cannot fight. So that was a stage of complete emotional breakdown for Arjuna. And for Arjuna, who was a warrior and a great devotee, he had to face that emotional wildfire, and it completely took him over. And Lord Krishna had to spend a lot of time and gave a lot of sermon and his thoughts before he could start the battle. So this is the this is an incident which clearly points out the role of emotion in everybody's life. Now, basically, emotion, as you rightly said, Ranjana rightly said, starts with some stimulus from somewhere. The stimulus for Arjuna was that his relatives were placed across in the army camp. And as he told later on, he could not kill his guru, he could not kill his Bhishma Pitama and his cousins and all. So that was the stimulus, and the response came in the form of a nervous breakdown, if I can use that word. Now,
emotion, let's break down what is an emotion. So what are the ingredients of an emotion? Let us first understand the problem, then we'll look for the solution. So first thing is the stimulus. Now a stimulus could be a provocation or an inspiration. Provocation could be like a snake suddenly appearing in my front, in my house, a cobra, and then the whole process of emotional reaction starts taking place. Either I decide to fight or I decide to run away. Flight or fight syndrome, as they say. This is negative emotion of fear. There are dozens of such negative emotions. We all know dogma is centered around such emotions: hatred, jealousy. Anger is one of the key emotions which have been discussed by Lord Shiva, Lord Krishna, Buddha, and Baba has referred to all those things in his discourses. The other emotion could be an inspiration. It could be a positive emotion. Now, what we understand by a positive emotion, as you rightly said, Randa Dada, love, respect for others, compassion, sacrifice, that everybody does for everybody, especially when we look at the family, at the mother, the role model for an emotional, emotional, I should say, show is mother. As far when it comes to the child, she plays with emotions, and the child who does not know rationality, he responds accordingly, emotionally. So the first thing is stimulus, then comes the response. It could result in a positive emotion, in a negative emotion. Now, there is a certain element of evaluation, cognitive element is there. They call it cognitive operators or epistemic markers. The psychologists have used this term, epistemic markers. It means that once there is a stimulus, like if I see a snake below my chair in my house, so I have to evaluate. I evaluate whether I can fight this problem or I have to run away. So this process of evaluation is so fast. Then I look for some stick. I look for some door to run away from the place if I can't fight a cobra in my house. So this is a process of evaluation. Now there is a physiological dimension, as we all know. Sudden emotion, emotional upset, it raises the heart rate, it raises the blood pressure, eyes get widened, and then if the fear, like I've taken up the example of fear. If fear is too serious, we may shiver out of fear, and we may collapse also. Baba has explained it. I'll come to that. Let me first try to explain the ingredients. Now, there could be an expressive part of it. For example, if I see a snake, I would like to immediately shout, snake, सांप आ गया, सांप आ गया. So there could be an expressive dimension. There may not be an expressive dimension. Like if somebody plays negatively with my emotion, if somebody humiliates me in my presence, and if that person is, say, my boss, I may not express anything, my anger, but I will carry that anguish, and someday it will, it may manifest itself. So it has a physiological dimension, then an expression. It could elude the expression, like I gave an example of a boss firing me in a meeting. I may not hit back. Then this could motivate us towards action. Like I said, if I want to kill a snake, I have to start taking some action. If I hate a person, and if that hatred has to turn into action, someday it may turn into action. Like, say, jealousy or hatred, the entire concept of dogma centers around that. Racial discrimination, it comes into action. People start hating, killing each other. Hitler killed, lakhs and lakhs of Jews because he was anti-Semitic in his belief. He believed that Jews are an inferior race compared to the blue-eyed Aryans, which he thought he was, Hitler. Secondly, it has connection to the environment. Every emotion has a connection to the environment. It is
we try to connect the whole atmosphere. Like, we can take another example. Say, if I am expressing love to someone, I'm always conscious of the environment. Say, if a couple is like expressing love, and if the child comes or if the in-laws come, then the whole atmosphere changes. And they may start talking about Bhagavad Gita also at the same time. So the whole connectivity to the environment also matters. It always matters. Like a small concrete example, if two boys are fighting in a classroom, okay, they are expressing their anger, anguish, whatever, envy, jealousy, whatever. If the teacher comes in, walks in, they will suddenly keep quiet and start behaving like disciplined boys and girls. So it is, every expression of emotion has a dimension of connectivity to the whole atmosphere. And finally, as the psychologists say, it's a mode of vigilance. It is how it's a cognitive subsystem that helps in smooth operation of life. It's a cognitive subsystem. Earlier, there was a belief that emotions corrupt the mind. Now, the latest research done in the field of neurology and endocrinology, they have said, the scientists now say that emotion has a positive role to play. Even a negative emotion, like if I see a snake and I fear, that fear will help me to save my life. To save my life. If I see a truck coming on a highway in front of my car, it may generate some fear, but that fear will give me the solution. Look, apply your brakes and take go to the flanks of the road. So emotion has always played a role of a vigilance officer in life. So these are basically the ingredients of emotion. The monumental discourse in this, I found there are at least a dozen discourses on this. Monumental discourse was given on Falguni Purnima in 1956 on vibration, form, and color. And I strongly recommend that everybody should go through it. Vibration, form, and color. He explains the whole thing. Now, as it is explained in psychological terms by Sri Shan Murthy ji, every emotion, how does it influence our system? First, it creates a vibration. It creates a vibration in the nerves that travels to the nerve cells, get hit, nerve fibers are affected, and then through the nerve fibers, that vibration travels to the brain. And then the brain immediately processes the whole thing. What should be my response to this particular stimulus? Like if an ant is moving up my fingers, without looking at the ant, the mind will do the mapping, and with one hand I may like to kill the ant or remove the ant, because brain has mapped where is the ant, what is the location of the ant on my left feet, and then without looking at it I may point and remove the ant. This is how things move. So now when he says, now let us come to a philosophical dimension of it, as explained in Anand Sutram. Anukul Vedaniyam Sukham. Sympathetic vibration is, is pleasure. And, then he goes further, that Sukham Anantam Anandam. Now, here is the bridge. Here is the bridge that emotion makes between the objective world and the subjective world. Subjective world of joy, bliss, and happiness, which is an inside phenomenon, and the objective world. So sukh may be coming from objective things, comfort, worldly benefits, worldly things, worldly, so many things are there for giving pleasure, but they may not give happiness. So, and then at another point he says, pratikul vedaniyam dukham. Any vibration which is not sympathetic to the nerves, fibers, and ultimately to the mind, we will try to avoid it. That's why we try to, a child, even a small child, once her fingers burned with fire, he or she will not, even if you push her hand towards the, fire, towards any form of fire, be it a gas chula, he or she will remove her hand and start crying. No,
because he or she has realized that this is not a sympathetic vibration, it will burn my fingers. So that is, when we call dukh, it is basically a whole gamut of unsympathetic vibrations. Like, anger is again a form of dukh, jealousy. These things create a lot of discomfort in our whole system. Now, right from day one, this has been a subject of concern. If we go through Shivokti, anger, Shivokti 5 talks about anger. Shivokti 6 talks about greed. And Baba has said these are all mental diseases. And he has also said in this lecture on vibration, form, and color, he says that if anger is not controlled, the person may die. And he gives another example that if some lady is taking her dinner, and if the news of her husband's death comes, then he says that if you suddenly release that news, she may die because the nerves will get a violent vibration and she may collapse. So he said that even good news or bad news should be released in installments. He has gone in details in this discourse on vibration, form, and color. So basically, it's a question of sympathetic vibration, unsympathetic vibration. Sympathetic vibration will give positive emotions. Unsympathetic vibration will give, negative emotions. These are different dimensions. Now, what is the relevance of when we talk about all these things? So first thing is that the whole gamut of emotion, which has been studied thoroughly now by a large number of scientists across different fields, cognitive scientists, neuroscientists, endocrinologists. Baba has beautifully explained this in a few discourses on biopsychology and plexi and microvita. This is another very important discourse that goes to explain the whole functioning of emotions. Now, as he has explained, we all know there are chakras, glands, and subglands playing a major role in this rise of emotions. Let's give a few examples. Like, let's see, for example, Manipur Chakra, Swadhisthana Chakra, and Anahat Chakra. Now, the negative emotions, mostly negative emotions, jealousy, hate, greed, these are generating from Swadhisthana and Manipur Chakra. Anahat is basically, he says, this chakra is a mixture of both, but then it is dominated by sentient qualities. So ultimately, Anahat plays a very positive role, but it has negative generation of emotions also. So basically, then he says that these chakras have to be controlled if we want to regulate emotions. Now, regulation of emotion is a major issue. When Lord Shiva says that, he talks about anger and greed, then Lord Krishna talks in great detail in second chapter of Bhagavad Gita, Shloka 63, all of us know, Krodhat Bhavati Sammoha. He explains how anger leads to complete disillusionment, loss of memory, and ultimate death. This is chapter 2, Shloka 63 of Bhagavad Gita. And then Buddha also talks about it. That's very interesting. And there is a famous discourse that we have from our guru about Sangrame Vaprityam. I again recommend that this should be seriously gone through in the context of emotion. Everybody should read it. What is this concept of Sangrame Vaprityam? He quotes Lord Buddha. And when he quotes Lord Buddha, he says that, Akodhen Jina Kodam, that is a famous shloka of Buddha, which he quotes and he explains. He says that why we should behave in a war or in a warlike situation in the opposite fashion. If the enemy is in a state of anger, fury, we should maintain our cool. That's what Buddha did. When all of us know, when somebody started abusing him, a friend of a businessman who was indulging in wrong practices and crime, so he started abusing, and then at the end of the whole abusive language,
Buddha was quiet. Then he asked, you have not reacted to my this entire vituperative talk. He said, if you give me a gift, if I don't accept it, it goes back to you. So he says, Baba has really appreciated the approach of Lord Buddha in this. And he says that this should be the approach in life, whether it is in mundane life or in spiritual life. Now, what is the context of discussing all this? I'll just wind up because I have taken, I think, more than 20 minutes. So the context is that in the when we talk about subjective approach through objective adjustment. Now, objective adjustment is a major issue when we have to handle emotions. And let me explain it. Let me put to you very, very clearly that emotions have been playing a major role in character formation right from the childhood days. A small child is taught very positive moral emotions by the mother, elder brother, like you say sorry if you have committed a mistake, you say thanks to express gratitude. So these are a small thing. This is a type of moral education going through, being transmitted through emotions. So character formation is done by these positive moral emotions where mother, teacher, friends, family, and friend, all the entire society plays a very positive role in this whole process of character formation. Now, at some point of time, every person has to regulate his or her emotion. All of us know that all of us fall prey to some surge of emotion, especially anger. Anger is the most common thing about which the whole lot of psychologists, and right from Lord Shiva to Lord Krishna, Buddha, they were all concerned about it because they knew that it is one thing which can really cause devastation. And all of us are experienced people sitting here. We all know that anger, hatred, and jealousy have spoiled many relations, have broken many families, have fractured many social groups, and ultimately fragmented our whole society. The whole concept of dogma is centered around prejudices. What are these prejudices? These are all a set of emotions which come out in the form of hatred, jealousy. Geo-sentiment is a type of, or geopatriotism. What is it? It's a type of love which is not good for the health of the entire cosmos. If we start loving a place too much, say our country, at the cost of some other country, that is not proper if we want a cosmic society. So the whole concept of geo-sentiment, socio-sentiment, it at its grassroots lies such emotions, mostly negative emotions. So we have to regulate these emotions. There are two dimensions I would like to conclude. Positive emotions have to be cultivated. In Prabhat Sangeet, if we take the example, there are 313 songs which use the word bhavana. And if we use other terms of positive emotions like love, courage is a very important thing. It's a positive emotion. There are about 2,000 songs in total which talk about love, courage, sacrifice, tears, if they are shed in for God, it is an expression of positive emotion. Some stimulus is coming from inside, either from God or from the devotee's love, which is forcing us to shed tears. So on one hand, we have to cultivate positive emotions through a process of meditation. And let me point out one thing. When we say that yam niyam ke bina sadhana nahi ho sakti. So yam, if we focus on that on those yamas, they are basically an interplay of emotions. When the child is taught by the mother, speak the truth, satyam vada, she is basically playing with her emotion, with her or his emotion. So everything basically boils down to emotional nourishment. Positive emotions have to be cultivated from the childhood days by the process of meditation, through a process of listening to good music like Prabhat Sangeet, even this Kirtan, Koshki, whatever. These all generate positive emotions. One very important thing Baba has said, that
the guru can, inject positive microvita and control these emotions. So that's so guru, the grace of guru is very important in cultivation of emotions. So on the other hand, we have to control our negative emotions, the entire set of dogmatic prejudices that the whole world has. So these are two different, it's a very big challenge, very easy to say things, very difficult to achieve those goals. Now, I'd like to hear from the other learned, dadas and didis whom I can see on the screen. Thank you. Thank you, Dada. Thank you very much. You have explained in detail about emotions. May I request someone else? Can I request Acharya Dilip Dada, if you are, यदि मेरे को सुन रहे हो तो आप कुछ इस संदर्भ में बोलेंगे? थैंक यू दादाजी, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार दादा. दादा, इस संबंध में हमारी ज्यादा तैयारी नहीं है. मैं तो जस्ट सुनने के लिए जुट गया था कि सब लोग को हम सुनेंगे. बट आई हैव एंजॉयड discussion of Haran Dada. He has spoken very well and to the point. The basically these type of subject which today you have chosen is for the lecture, basically, not for the discussion, because there can't be two different point of views. In a spiritual field, there is only one way, there is only one path. So in such a cases, one person should give a lecture, others should listen, and after listening, they should raise some points, like if they have not been able to follow and understand the lecture, then there should be some counter questions. So the subject matter is of that type. Right. Because if it is a social and political things, then there could be a different point of views, and then people may give different versions of their own, and then things get refined that what is right. But here the subject itself is right. Like there is no point of different discussions as far as the subject is concerned, because in the field of spirituality, the emotions play a very important role. Here the emotions means bhakti. Without a bhakti, the emotions means in the realm of spirituality, it is only bhakti by which you can advance. You can prosper in the field of spirituality. You can so this is a fundamental, basically. So there can't be two opinion on this. And but there are negative aspects of it, which Dada Haranand has also touched upon. Like, because of this bhakti, certain dogmatic practices also gets erupted. So the base knowledge base has to be good. A person within should be in a position to question what is right, what is not right, how one should behave, to what extent one should just follow blindly, or those kind of things. A person has to always question himself. This is how, and then there has to be a journey towards the supreme goal. So this is how the things will should be done. So this is just my initial observations, since I have not prepared anything on the subject, so I'm not in a position to give much of input, but I would like to listen others. Thank you, Dada. Thank you very much.
this subject is such that everybody can contribute and the people presence can get enriched. You rightly said that there cannot be a discussion kind of thing, but yes, everyone can contribute and the presence people can enrich themselves. Of course, Dada, thank you so much. Then anybody else would like to say, by the time I am moving on some ingredients I have thought of. For example, जैसे हम लोगों ने बात किया किस तरह से डिवोशन से कनेक्टेड है. देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि भावनाएं जो हैं वो जैसा दादा ने बताया बायोसाइकोलॉजी में दे आर टोटली रिलेटेड विद आवर वृत्तिस, tendencies. So, and for that is how he explained in biopsychological terms. It is connected with each chakras, and each chakras vrittis, and especially the lower vrittis or negative vrittis are in the lower chakras. And the human vritti starts from Anahata chakra. For example, if जैसे अष्टपाश षड रिपु जो हैं, जो ये बेसिकली ये वृत्तियां हैं. यदि हम वृत्तियों को समराइज करना चाहते हैं, जैसे अष्टपाश हम कहते हैं ना, घृणा, शंका, भय, लज्जा, कूल, सील, मान, जुगुप्सा. These are the acquired sentiments, acquired emotions from the surrounding, and there are some by birth it comes. For example, षड रिपु जिसको हम कहते हैं, that is काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य. So these are the qualities which come in born, but these can be channelized in a positive direction, though they are negative. And there's many examples Dada gave that even the negative emotions are giving you the positive solutions. So those are very important. And जैसे मैं आना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों को इमोशन डेवलप करने के लिए, आई फील सो कि कुछ ऐसी चीजें हमारे स्पिरिचुअल पाथ में दी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे दादा ने बताया कि माँ जो है बच्चे को बोलती है यू मस्ट से थैंक्स, यू मस्ट से सॉरी. So these are the emotional teachings. In the same way, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने कुछ ऐसी चीजें, जैसे दादा ने प्रभात संगीत की चर्चा करी, आप हम सब जानते हैं कि this motivates us towards spirituality. Then कीर्तना, of course, कीर्तन को तो साधना सहायकम कहा गया है. Even asanas, because asanas either pressurize or depressurize the glands, and accordingly it makes the gland or subglands to secrete the hormones so that we behave accordingly. So their role is also there. So asanas is also very helpful in controlling your vrittis. एक जगह मेरे को याद आ रहा है, बाबा बोलते हैं कि मान लीजिए किसी के में एक वृत्ति है कि उसको पब्लिक स्पीकिंग में भय लगता है. प्रोबेबली ये ग्लैंड्स एंड सबग्लैंड्स चैप्टर में ही है बायोसाइकोलॉजी में. वो कहते हैं कि यदि वो मनुष्य, उसको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, यदि वो कुछ महीनों तक रेगुलर यदि वो मयूर आसन करे, क्योंकि जो डर है, जो भय वृत्ति है, वो मणिपुर चक्र से संबंधित है. तो यदि वो मयूर आसन करे रेगुलर फॉर सम टाइम, देन इस वृत्ति से वो निजात पा सकता है. So these are how beautiful elements are there which can convert or you can control the negative emotions, I must say that. इसी तरह से मुझे याद आ रहा है कि जैसे प्रभात संगीत है, जैसे हमने बात किया प्रभात संगीत का, कीर्तन की बात किया, बट एक बात देखिए, बाबा कि हम लोग स्टोरी सुन रहे हैं ना कि पंचजन्य में बाबा कभी बोले हैं किसी को कि देखो जी, मैं तो 5 बजे सबके दरवाजे पे आता हूँ, यदि पंचजन्य नहीं होता रहता है तो मैं लौट जाऊं. सी द इमोशनल टच टू motivate, to elevate your spirituality. That is why we, and my positive microvita की बात आने का, तो positive microvita, it has been said by Baba himself in many discourses that the morning hours, जिसको हम प्रभात का बेला कहते हैं, उस समय positive microvitas are more in atmosphere. And there, when we start Panchajanya as our spiritual routine, it's a kind of emotional connection. Even Dhyan is an emotional connection, nothing else. So in that way, I want to say कि emotion का कितना बड़ा role है हमारे आध्यात्मिक डेवलपमेंट में. That is the beauty of emotion. So ये जो कुछ बातें मुझे याद आई during this discussion, so I wanted to share. Anybody would like to say something by this time on these subjects?
So let us add things which will help all of us. And by the time I'll take few more lines. For example, guidance and intuition. We know that. So emotion can also be seen as a form of guidance in spirituality. As देखिए बाबा एक जगह और कहते हैं, मुझे याद आ गया, that this is also kind of emotional development with your ishta. कि तुम सदा मुझसे बातें करो, मुझसे पूछे बिना या बताए बिना कोई काम नहीं करो. See how beautiful this relation brings, like something like mother tells the child कि तुमसे पूछ के ही कोई काम करना, मुझे बताए बिना कुछ मत करना. It's such a beautiful interactions. So here the guidance and intuition. So emotion can also be seen as a form of guidance in spirituality. Some individuals believe that emotions, particularly intuitive feelings and gut instincts, are also there, which comes and can lead them towards spiritual truths and insights, जिसको हम कहते हैं. तो emotions may guide individuals on their spiritual journey and help them make decisions in alignment with the spiritual values as well. तो इसी तरह से कंपैशन है, आप सब जानते हैं. कंपैशन तो इतना बड़ा स्पिरिचुअल क्वालिटी है. I mean, entire new humanism is compassion. Means I love not only human beings, I love entire creation. So ये बड़ी ये भी एक सेंटिमेंट है. I mean, so the compassion and service, जैसे हम लोगों का मिशन है आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय. We know that without one other cannot be achieved to the great extent. So they both are correlated. तो इसी तरह जो compassion है, compassion is an spiritual quality, means loving all, not only humans. For example, many spiritual teachings emphasizes the importance of compassion, empathy, like Dada immediately told, the empathy, the sympathetic nerves and parasympathetic nerves, the selflessness, the emotions like compassion and empathy can drive individuals to engage in act of kindness, services, charity, so which are very often integral to the spiritual growth and fulfillment. So these are the beauty and powerful power of emotion in developing spirituality. And here when we are saying compassion, let us go a bit in deep in this. तो एक जगह है ना सर्वभूतेषु, तो एक श्लोक है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयेन नुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न vijuguप्स्यते. Probably it's like that. So the person who sees himself in everything and everything in himself, मतलब सब में खुद को देखना और सब में खुदा को देखना जो बात है, that's our second lesson. So ये जो भाव है इसको कहते हैं compassion. That is what I told Neohumanism also talks about, that we have to embrace everything. So every creation of the, so here we are not talking of only Sarva Bhuteshu when he is talking. That is why I mentioned this sloka. Sarva Bhuta means in all created beings. Here created beings does not refer to the animate objects alone, but refers to the both animate and inanimate objects also. That is what our Neo-Humanism talks about. So Parama Purusha resides in everything, in matter, in abstract, and also in spirit. So what we call matter also contains the reflection of the Parama Purusha. So with this, we can understand that how important is emotion. And sentiment, emotion, and thoughts, I told they are quite correlated. And that is how this was coming to my mind. Anybody else by this time? I hope you must be ready to talk on something more on this subject, please. Oh, if yes, thank you, Muralidharji. Thank you so much. Yes, you can unmute and talk. Srija Muralidharan Didi, please. Thank you. Oh, Namaskar. Namaskar, Dada. Very competent to talk on this, but just something that comes to my mind because I'm still learning. But something that comes to my mind is in the daily application of that topic as to development
of our emotions in the path of towards the path of spirituality. I look at it that way. And when I say this, all that we are Rightly practicing, said. Go on. Yeah. all that we are practicing should be in such a way, because I'm just remembering that sentence where I have read that it is emotion when it is not regular on a regular basis, but it is devotion when it becomes a practice. It's practiced regularly. So what I read from here, where I've read somewhere, I don't remember where I read it, but this sentence where if you practice, if it is irregular, then it becomes, if it is haphazard, then it becomes emotions, and if it is practiced regularly, and then Baba has given it to us as a routine, as everything as a routine, and so it becomes a daily routine, a daily practice, and then just becomes part of our life, and then we cultivate devotion in us, and we don't become emotional. Develop emotions, but we become emotion. One of the emotion is bhakti, which is, devotion. Regularize it, then it becomes devotion. So we can understand how important it is to develop bhakti, to develop devotion in the path of spirituality. So spirituality itself, we know it's culmination of ourselves in Param Purusha. But how do we do this? We have to practice. And if so, how important it is that we practice every part of Baba, what Baba has given to us, right from Prabhat Sangeet, Kirtan, Kaushiki, Tandav, asanas, practice Neohumanism, get into proud, practice collective meditation, Sangachatvam, everything, it should become part of our life if we want to practice devotion, and then we reach spirituality. Because it is just the Anand Marga is the path. And when we have to practice, only if we practice it, we will remain there in the path of bliss. Just, most of us, we are not able to get on there because of our various issues. It can be lifestyle, it can be our practical problems. But thing is, we should understand that it is absolutely necessary to, because I understand. But that should be our goal, our immediate goal, so that we get there. Instead of saying that I can't, which I find many of us have, we are finding it difficult to get there. And if that could be understood, then this topic would really, everything that Haran Dada was saying, and Dilip Dada, though he said he didn't want to speak much, he said he touched a very important point, that there's nothing that we can debate on this. We have to do it. We have to go ahead and just. I thought that was the thing. If we want to be there, we have to follow the Guru, and it should not become dogmatic also when we present it to others, and therefore we need to understand and experience it so that we can express it to others. So that we are also not in the process of rituals, because rituals are something you do without understanding. And then we become dogmatic. But if we understand, because that is why I think Baba has given us everything in very simple language. Why fast? Why practice asanas? Everything is given us with reasoning, so that we do not become we do not get into one more ritual. And if that is done, this topic really makes sense. And I want to hear from
every other person who's really good at this as to how to do it. Thank you, Dada. Thank you, Guruji. Thank you. You rightly said that devotion. So, I mean, something is coming to mind. For example, if there is a emotion and then rationality together, obviously it will go towards devotion. So, with that, your important input, Didi. May I request one by one? Meera Didi, would you like to speak on the subject, please? Randa Dada, I Yeah, will Haranand Dada. Yes, just yes. a small word to supplement what Srija Didi has said. Yes, While yes. taking on Lord Shiva's teachings, Baba has said that devotion is nothing but emotion organized in a disciplined and methodical way. These are the terms he used. Yeah. Methodical discipline is Methodical. of disciplining of emotion is devotion. Yeah. This is what he has said. Bas, thank you. Thank you, Dada. And could you please tell me the reference where I forgot where I read Yeah. it. Yeah, Shiva's Where is that teaching. reference? You go through Shiva's Namah Shivoti. Shiva Shanta, you'll find there. Your teachings in Namah Shivaya I didn't get Shanta, it. you can. I can give you the Nam reference Shivaya. also. Oh, Yeah, yeah. I'll locate it. Okay. So, may I request Meera Didi, Namaskar. please? thank you. Yeah, Namaskar, Baba. Namaskar to everyone. Namaskar. Really very important topic. Actually, spiritual wellness, knowledge, our search for deeper meaning in life. When we are spiritually healthy, we feel more connected to not only a higher power, but to those around us. सो स्पिरिचुअलिटी अगर इमोशन के साथ कनेक्ट करे एंड विद पॉजिटिव इमोशन नॉट लाइक नेगेटिव समटाइम नेगेटिव भी होते हैं एंड सराउंडिंग बच्चे के साथ या इमोशनली वीक पोजीशन पे आते हैं बट अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी हमें स्ट्रांग बनाता है इमोशनली स्ट्रांग mentally strong or dealing with our negative emotion also it helps us a stronger person between the family between the surrounding people and even जैसा कि आपने बोला या हरानंद दादा ने बोला सोशल सोशल ड्यूटीज भी अगर स्पिरिचुअल पर्सन है तो उसका ज्यादा इंक्लाइन होता है उनके प्रति स्ट्रॉन्ग हमारा थिंकिंग होता है कि उनके लिए हम क्या सोचें और इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं मेरा घूम फिर करके प्राउड की तरफ ही चला जाता है इस प्लेटफॉर्म पे अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो बहुत ही जरूरी है प्राउड को स्पिरिचुअल क्योंकि बाबा ने बोला है 98% स्पिरिचुअलिटी एंड 2% ओनली प्राउड के लिए हमें जरूरत है अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे इमोशनली हम फिर वीक नहीं होंगे इमोशनली भी हम स्ट्रांग होंगे तो इमोशन का तो बहुत बड़ा रोल है और साथ साथ अगर स्पिरिचुअल इसमें दोनों को मिला दे तो एक बेटर पर्सन और स्ट्रॉन्ग पर्सन हम निकल करके आते हैं मोस्टली लोग बोलते हुए मैंने सुना अरे तुम स्पिरिचुअल हो फिर तुम किसी चीज पर तुमको गुस्सा क्यों या फिर रॉन्ग चीजों पे रिएक्शन क्यों आता है क्योंकि हम स्पिरिचुअल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हैं और रॉन्ग चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो स्पिरिचुअलिटी हमें वीक नहीं हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है ये गलत फहमी है लोगों की कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमें वीक होता है मतलब कि हम हैंडीकैप नहीं हम इतने स्ट्रांग है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि छोटी छोटी चीजें हमें हिला दे हमारे थिंकिंग को वीक कर दे फैमिली के लिए हम फैमिली के लिए गलत चीजों के लिए हम झुक जाए तो मोरलिटी भी हमें सिखाता है स्पिरिचुअलिटी इमोशनली स्ट्रांग भी हमें बनाता है और जैसा डिसिप्लिन हमारे लाइफ में यमा नियम के साथ हम इतने स्ट्रांग अपने आप को बनाते हैं और बाबा का जैसा कि हरानंद दादा ने बोला या फिर आपने जैसे बोला कि सुबह 5 जनवरी से बाबा बाबा का तो वो फीलिंग हमें उठा देता है सुबह 4:30 उठ करके बैठ जाते हैं बाबा आकर के वापिस न चले जाए या एक अलग अटैचमेंट होता है कि बाबा ने बोला है कि 5 जन करना है तो ये इमोशन ही तो हमें उसके प्रति स्ट्रांग करता है और प्लस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इमोशनली अगर हम स्ट्रांग हैं तो हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा थिंकिंग स्ट्रांग होगा
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हर किसी के जीवन में, मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि तुम इमोशनल वीक इसलिए हो क्योंकि अगर कहीं पे वीक हो रही हो, इट मीन्स तुम्हारा स्पिरिचुअल जो गोल है उस पे अभी स्ट्रांग नहीं हुई हो। जितना ज्यादा हम स्ट्रांग होते जाएंगे, हम इमोशनली वीक नहीं होंगे, हम इमोशनली इतने स्ट्रांग पर्सन होंगे कि हमें हर सिचुएशन को डील करने की कैपेसिटी बहुत ही इजिली हम डील कर सकते हैं। हमें इफेक्ट नहीं करेगा हमारे सराउंडिंग, कुछ भी अगर थपेड़े आएंगे, डेफिनेटली हम ह्यूमन है, थोड़ी छोटी चीजों से थोड़े बहुत, बट इतने भी नहीं वीक हो जाएंगे। मैं अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस से गुजरी हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं और डे टू डे स्ट्रांग ही होती गई, बिकॉज ऑफ मार्गा और बिकॉज ऑफ दिस जो हम लोग पाथ को फॉलो करते हैं, ये मुझे स्ट्रांग बनाया डे टू डे। हर परिस्थिति में जब एकदम एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशन था तब भी मैं डरी नहीं, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं श्री पी आर सरकार, उन्होंने इतना स्ट्रांग हम लोगों को बनाया है, हमारे थॉट को, हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटी को, कि हम अगर समाज में, सोसाइटी में इस सारी चीजों को ले खड़े हों तो एक हम भीड़ में हम एक अलग दिखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें वीक नहीं, बहुत ही स्ट्रांग बनाती है। और इस पे डेफिनेटली चर्चा, बहुत ही अच्छा दादा आपने टॉपिक लिया है और चर्चा करना चाहिए हमको इस पर। अपने आप को एनालिसिस भी करना चाहिए टाइम टू टाइम कि अगर इमोशनली वीक हो रहा है, इट मीन्स हमारी कहीं ना कहीं पूजा में कमी है, हमारे डिवोशन में कमी है, हमारे यम नियम में कमी है, 16 पॉइंट में कमी है, हमारे बाबा ने 5-10 तिल दिया है, उसमें कहीं ना कहीं हम हिले हुए हैं, तभी हम इमोशनली वीक है। अदरवाइज अगर हम सारे डिसिप्लिन डू एंड डोंट्स को फॉलो करें तो हम इमोशनली इतने स्ट्रांग होंगे, इतने स्ट्रांग होंगे कि हमें किसी भी तरह के तूफान को झेलने की कैपेसिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच दादा। Thank you, Didi. Thank you very much. Thank you very much. The point is that देखिए, हम प्रौत के क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म पे इसे इसलिए लिया गया है कि वी ऑल नो दैट we need a leadership. Some society needs a leadership like Sadhguru. And बाबा का स्टेटमेंट है कि विदाउट स्पिरिचुअलिटी नथिंग कंक्रीट कैन बी डन. सब लोग अच्छा कर रहे हैं, पूरे दुनिया में बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, but nothing concrete is being done in absence of spirituality. So that we have to understand. And unless a person, you rightly said, unless you are in yama niyama, you cannot do sadhana, even you cannot be spiritual. So for spirituality you have to have a moralist, you have to have a mentally strong. और आप जानती हैं बाबा एक और एग्जांपल दिए हैं, आपके बात से मैं रेफरेंस लेके बात कर रहा हूँ प्रौत का, कि सद्विप्र जो होंगे किस तरह का व्यक्तित्व होंगे वो, यस, सो दे विल बी अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी. एक एग्जांपल देता हूँ सद्विप्र का, जो बाबा बोलते हैं समाज में रह करके उनकी वो कैसे समाज को डील करेंगे. यदि मेरा कोई खास हो, क्लोजेस्ट रिलेटिव हो, यदि वो गलत है, I will not hesitate in taking action to correct him or her. This is the beauty of the Sadvipra leadership, because they have spirituality is the base there. And same fashion, if you, यदि मैं किसी को पसंद नहीं करता हूं for any reason, but if he is doing something good for the society, if his actions or her actions are good, I must appreciate that. So ये केवल एक स्टांच मॉरलिस्ट और एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर में ही आ सकता है, which a Sadvipra's leadership is expected to be, and that is why the future requires a leadership like a Sadvipra's leadership. Then only इसीलिए बाबा कहते हैं nothing concrete can be done without spirituality. So thank you, Didi. Yeah, Srija, Didi, if you want to say something, please. If no one else has come in, I'll just take 2 minutes. When Dada, you were talking about the Sadvipra leadership, yes, it's a process. It has to be developed. When we talk about developing the personality within ourselves to reach there, it is not just the outside but the inside. So if so,
we need to have some, because we have this concept of subjective approach, objective adjustment. Okay, so that subjective approach to go there, the objective adjustment, what has to be done? Uh, it is a, it's a vast area where most of us do it through trial and error. Okay, it's a huge process. As you experience it, you learn it. But I would suggest in this forum that we have a, a system, or I could even say a syllabus, where we could graduate ourselves in the process of developing ourselves in terms of our propensities, in terms of our limitations, a good propensity development, bad whatever is the weakness, controlling it by the process of various other things like asanas, or mudras, or even our physical development. Then we can start experiencing Baba, or the grace, so that we also feel that we are progressing, and that gives us the confidence to move forward, and we could say, yes, I am in the process of graduating myself. So to have the well, I'm just putting in this forum that if this process can happen in our university, because we have a large university setup which can cater to the entire population as to its requirement, knowledge that can be given in the Vidya part of it would be very enriching for the generations to come. So I would propose this in this forum. I would like to hear this. Thank you. Okay, Didi, thank you very much. Yes, Gautamji, you can unmute and speak. नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्कार सभी को। एक मैंने एक कहानी से अपनी बात रखना चाहता हूँ दादा। खिजूर की पत्नी जब श्री कृष्ण उनके घर आते हैं तो उनको बड़े भाव से उनको केला खिलाते रहते हैं। तो विदुर जी आके देखते हैं, विद्यावाणी को बोलते हैं, मतलब उनकी पत्नी को बोलते हैं, अरे तू क्या कर रही है? बोले क्या कर रही है? बोले केला खिला रही है। बोले ध्यान से देख। तो देखती है कि छिलका कृष्ण खाए जा रहे थे और केला सब रखा हुआ था। तो बोले मेरे से तो गलती हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले कि अब मैं केला खिलाती हूँ। कृष्ण को बोलती है मेरे से गलती हो गया, ये है वो है। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, अब जब केला खिलाना चाहती है तो कृष्ण बोलता है रहना दो आप। वो जो तुम मुझे खिला रही थी ना, उसमें जो मजा था ना, अब इसमें नहीं है। तो वो एक कहीं पर बोला गया है ना, है लुत्फ इसी में, मजा इसी में है, अपना पता न पाऊं तुझे देखने के बाद। द काइंड ऑफ डिवोशन हम इसको बोल सकते हैं। एक और प्रसंग पे बात करूंगा दादा। मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी मतवाली हो गई है, जगह जगह घूम रही है, तो मीरा कृष्णमय हो गई है। तो कृष्ण को मीरा के शरीर से, मीरा के मुख से बोलना पड़ रहा है, क्या तुमने मीरा को देखा है? सी द हाइट ऑफ डिवोशन। तो जब आप अपने आप को भूल जाते हो, समर्पित कर देते हो, तो ये भावना, अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में भावना नहीं होगा, तो हम समर्पण नहीं होगा, तो वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? अब कबीर दास की बात पे चलता है, जब हरि तब मैं नहीं, जब मैं तब हरि नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दोनों समाई। जैसे पानी जो गर्म होता है 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है बोलते हैं, बट जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्योर जो फीलिंग्स, जो इमोशंस है, तो जितनी ज्यादा बलवती होते जाएगी, हम उस रास्ते पर, आध्यात्मिकता के रास्ते में उतना ज्यादा हम जाते जाएंगे। अपने आप को उसमें डुबोना पड़ता है, तब जाके हमको कुछ मिलता है। जो खो रहा है अपने आप को, वही ईश्वर को पा रहा है।
जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो ये जो है, आप दादा पहले जो बताए अष्टपास, सदऋतु, अब हरण दादा जी जो बताए कि पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, ये सारी चीजें जरूरी है। पर उसको देखते हुए कैसे हम चैनलाइज करेंगे, हमारा जो अल्टीमेट गोल है ऑलमाइटी को प्राप्त करना, तो वहां तक की हमारी यात्रा है। और जैसे योग चित्त वृत्ति निरोध, अब योग माने मिलना, अब वहां जब ये बोल रहे हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, तो बाबा ने जहाँ पर बोला है कहीं पर कि ना हम पिछामी वैकुंठे न योगदा हृदय न चमद भक्ता ये प्रजाते सत्र शिक्षामी नारदा, मेरे भक्त लोग जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां पहुंच जाता हूँ, वहीं मैं रहता हूँ, यह न बोल करके मैं वहां जाने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। ये बोलना शायद ज्यादा अच्छा होता। मैं दिल्ली साउथ गदईपुर में जो आश्रम है वहां पर पढ़ा था कहीं पर, मेरे बाबा की बेटी है। तो कहने का मतलब है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो भाव नहीं होगा तो आपको भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे। और जहां तक दीदी कभी तो बोल रहे थे कि यूपीआईएफ में, क्योंकि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जाएगा अपने आप को हम खोते जाएंगे। लोग बोलते हैं नॉलेज में मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि नॉलेज जैसे जैसे मिलता है लोग अपने आप को खोते जाते हैं, और जैसे हम अपने आप को खोते जाएंगे हम परमात्मा की ओर अग्रसर होते जाएंगे। इसी बातों से मेरा आपको विराम देता हूँ। जैसे जैसे खोते जाएंगे परमात्मा की ओर होते जाएंगे, क्या बात है। सो थैंक यू वेरी मच दादा, आप सही बोले। देखिए Can you भगवान translate it, Dada? दीदी Can you translate it? see he only wanted to tell that Paramatma don't want any material things. He want bhav ke bhuke bhav, you know, I understand. So he want bhav. That is, I mean, how really you are with me or you want me. So he want that. That's why you may have heard about the story of Vidur wife feeding what do you call Yes. kela to बनाना का छिलका, बनाना 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 पील ऑफ बनाना, पील ऑफ बनाना। Banana peel. Yes. So now may I request Poonam Didi to speak on the subject, please. Thank you. नमस्कार दादा, नमस्कार एवरीवन। दादा, हम लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ चीजें दिखनी चाहिए, जो मैंने आज ही महसूस किया, वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। आपकी जानकारी में होंगे, रामचंद्र दादा का रात को कल देहांत हो गया। उनकी बेटी भी टाटा में है, हाँ सुधीर जानता दादा हूँ की। दीदी, हाँ रामचंद्र जी, हाँ। तो उनके यहाँ मैं गई सुबह, तो वहां पे मैंने जब दीदियों को कहा कि आप लोग भी जा सकती हैं जहाँ डेड बॉडी का डिस्पोजल होगा घाट पे, तो कुछ लोग उनके घर के मना करने लगे, नहीं नहीं आपको नहीं जाना है। फिर एक आदमी आके पूछे, क्या दीदी मैंडेटरी है जाना बेटियों का? हम बोले देखिए मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपकी इच्छा है, आपके अंदर अगर भाव है मुझे जाना है, तो आप जा सकती हैं, आपको कहीं कोई रोक नहीं है। फिर भी उनके यहाँ एक आदमी कोई रोक रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने देखा कि मुझे देखने के बाद कि ये एक दीदी होकर ऐसी अवस्था में ये आई हैं, सारी दीदियां तैयार हो गई जाने के लिए। और उनके यहाँ एक मतलब नई परंपरा की शायद शुरुआत हुई, क्योंकि उसके पहले वो लोग मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी जाने के लिए, कोई अरेंजमेंट भी नहीं था। तो अगर हम लोग कहीं जाते हैं, खासकर महिलाओं को अभी भी बहुत बाधा है, ये भी एक भाव ही है। बेटा जा सकता है, बेटी के अंदर की इच्छा है, फिर भी लोग उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो बाबा ने तो पूरा राइट दिया है बेटियों को हर चीज में, तो हम अपनी भावनाओं को उस जगह क्यों रोकें? और हम इतने वीक भी नहीं है, इतने वीक तो नहीं है कि हम लोग शमशान में 2-4 शव को जलते देख करके घबरा जाएंगे। वो तो सबका डेस्टिनेशन है, हमें इतना स्ट्रांग होना है इमोशनली, और हम दूसरों को प्रेरित कर पाए, हम समाज में एक नया माइलस्टोन सेट करें। इस तरह से अगर हम अपने आप को समाज में डेवलप करते हैं, तो इनर एसेट तो हमारा डेवलप रोज हो ही रहा है, वो बाहर में दिखना भी चाहिए। ये चूंकि मेरा आज का अनुभव था दादा, तो मैं सोची मैं थोड़ा शेयर कर दूं। चूंकि जब तक हम लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके नहीं समझेंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं बाहर के लोग समझ भी नहीं पाते। थैंक यू दीदी, बट ऐसे ही धक्का देना पड़ेगा। आई अप्रिशिएट, आई मीन द काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी स्टेप यू हैव पुट इन। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल मूव। थैंक यू। और बोलिए दीदी आगे प्लीज। नहीं दादा, बस यही बताना था मुझे कि एक चेंज हमने, एक छोटा सा चेंज उनके यहाँ लाया, और मुझे लगता है वो लोग इसको याद रखेंगे लंबे समय तक कि दीदी कोई आई थी और ऐसा करके मेरे यहाँ गई कि सारी महिलाओं को चेंज कर दी। और आगे मैं
ऐसा कोई मार्गी परिवार नहीं है दादा जिसके घर में 10 ननमार्गी नहीं रहते हो। हर परिवार में मैंने देखा है, और ननमार्गी लोग अपनी बातें करते ही हैं। ऐसी जगह पे जा करके हम लोगों को अपने आप को स्ट्रांगली बेस करना होता है, तब हमें पता चलेगा कि हम इमोशनली कितनी स्ट्रांग हुए और हमारी जर्नी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। जर्नी अंदर कितनी है वो बाहर वैसे तो नहीं दिखेगी जब तक हम बाहर अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे नहीं। वेरी बस गुड पॉइंट इतना ही बोलना था दादा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। ना। थैंक यू दीदी, यू कैन स्पीक फर्दर, बिकॉज अब आपके बाद से मेरे को बाबा का एक फर्दर स्टेटमेंट याद आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी हैज अ स्ट्रेंथ which no other strength can compared with. So that is what strength you have shown there. तो ये अंदर की चीजें हैं, बोलते हैं धर्म से सूक्ष्मा गति, तो ये अंदर आपके बिल्कुल रहती है ना। जहां मौका मिलता है फिर वो दिखता है कि हाउ दिस मैन और वुमेन इज। सो दिस इज वंडरफुल, यू एक्सप्लेन दिस। यस मीरा दीदी, वांट टू से समथिंग? थैंक यू सो मच दादा। वो भी वही बात बोलेगी, दीदी भी यही बोलेगी। एक्चुअली पूनम दीदी जो बोली उस पे मुझे अचानक याद आ गया, मेरे पापा का दादा जब डेथ हुआ था, हम लोग पूरी फैमिली गए थे घाट पे, और बहुत ही भव्य, मतलब मैं उसको इसलिए भव्य वातावरण बोल रही हूँ, लोगों को लगेगा कि डेथ में ये लोग ये वर्ड आपके यूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हम लोगों ने धर्म चक्र किया, पूरी फैमिली ने हमने धर्म चक्र किया, वहाँ भजन, हम लोगों ने प्रभात संगीत हम लोग गाए, और वहाँ इतने क्राउड लोगों का था, और लोग आ, मतलब स्तब्ध होकर के देख रहे थे, और वो जो वातावरण था उसका मैं व्याख्या नहीं कर सकती हूँ दादा। माई मदर ऑल्सो सच ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, सी ऑल्सो टोल्ड कि मैं भी चलूंगी, और वहाँ कोई ऐसे लोग नहीं थे इवन कि कोई ये बोल दे कि महिलाएं क्यों जाएंगी। वैसा वातावरण हम लोगों ने बनाया हुआ था पूरी फैमिली ने कि किसी को ये बोलने का हिम्मत तक नहीं हुआ कि महिलाएं वहां कैसे जाएंगी। हम लोग सब वहां गए, वहां पे हम लोग धर्म चक्र किए, सम्मिलित पूजा किए, और उसके बाद सारा जो रिचुअल्स जो होता है बाबा की विधि के अनुसार कंप्लीट हुआ, और फिर लास्ट में धीरे धीरे करके सब लोग आना शुरू किए, हम लोग भी आए। सारे आचार्य दादा लोग जो वहाँ मौजूद थे, दादा लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से वहाँ पे कंप्लीट किए। सारे सेंट्रल से दादा आए थे, और जो लोकल दादा आचार्य दादा लोग थे सब लोग आए थे। मधुवर्तानंद दादा और रुद्रानंद दादा काफी सारे लोगों को बोले थे कि ददन दादा की ये है, उसमें जाना बहुत जरूरी है। और जबकि कोविड का टाइम था दादा, और सब लोगों के, हम लोग ऐसे सोचते थे कि पापा का अगर कुछ कोविड टाइम में होगा तो क्या होगा, लोग आएंगे नहीं, लेकिन लोगों की लाइन लगी थी दादा। मेरे जो यंगर ब्रदर, मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, वो एसपी थे उस समय, हमीरपुर में रायबरेली एसपी थे हैं, और वहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, और जब जा रहे थे लग रहा था कि जैसे कोई ऋषि मुनि की विदाई हो रही है, उस तरह का था। मीडिया और चारों तरफ से लोगों का जो लगा हुआ था। तो ये जब दीदी बोली तो मुझे अचानक उसी बात पे मुझे याद आ गया, और मुझे लगा कि मैं जरूर शेयर करूंगी, थैंक क्योंकि यू। ये एटमॉस्फेयर अनमार्ग में दादा शेयर होना हो चुका है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो बाबा ने एक चेंज दिया है हम लोग सबको, बेटियों को बेटों को जो अधिकार दिया है, वो चेंजेस आने शुरू हो गए हैं हमारे समाज यस में। यस, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। जितनी भी हमारी भी बातें कर रहे हैं, these are all the comes in a category of emotions, you know, and these are all positive emotions. We want to change the society, and that Yes, is how, दादा, yes. and that is why we call no Anand Marg is a revolution, and Anand Marg is a revolution not only in only spiritual sphere, but mental sphere, social sphere, you can say even political sphere, so socio-economic sphere. So Yes, yes. it is a revolution in true sense of the term. So we are fortunate that we have got such a perceptor, that we are in this mode and mood, and we can understand this subject very well. Yeah, Srijay Didi, you have raised your hands. You want to speak further something? I just want to add that, of course, Meera Didi said that in those during
we mentioned that there's departure, physical departure, where we were second thought, can we go, or even can a woman go there? Though the dogma is there, but when it comes to marga, people know it's not, and there's no second thought. There was such a good participation, and the vibes were felt, and why Baba says there's no difference between brothers and sisters. Yeah. It was experienced, and the change, as Didi was saying, the change will be seen when we do it, and it's happening, and it's in the right perspective. And every act that we do, the physical act that we do, will make it obvious, will make it visible. So it just remains in our mental and spiritual plane is not enough, and that is where proud, it has to come into the physical execution of it. Yes. And we can see that happening. Thank you. Such people can only execute proud. So we are. दादा एक और वन मोर आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, काफी अच्छा टॉपिक रहता है दादा, एंड इसको हम लोग लाइव भी करना चाहिए फेसबुक पे, सो दैट वहाँ काफी सारे लोग रिकॉर्डिंग को देखते हैं या फिर हाँ, लाइव बाद तक लोग देखते रहते हैं दीदी, बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट. एक दिन आप हमारा क्लास ले लीजिएगा. I'll do that. दादा बहुत ही इजी है दादा. I know it ठीक है must be दादा. simple. जब तक हम नहीं जानते हैं तो हमको टफ लग रहा है. I'll contact you दीदी in this direction. Thank you so much. May I request Haranand Dada to speak something more on spirituality, and anybody else? Pankaj, you want to say something, Pankaj Babu? Dada, sorry, I had got disconnected. Namaskar to all. नमस्कार. हाँ, मैं अपनी जर्नी, जैसे मैं लास्ट 1 ईयर हुआ है जैसे मुझे अभी आनंद मार्ग में जुड़े हुए, और मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, मैं पहले मतलब थोड़ा मेरी स्पिरिचुअलिटी की साइड को लीनिंग पहले से थी, मतलब घर में पूजा पाठ वगैरह होता था और मंदिर जाना, ये सारा सब कुछ था. और जैसे लास्ट ईयर मैं जुड़ा तो मतलब थोड़ा एक होता गाइडेड तरीके से मेडिटेशन करने का पता लगा, जो दीक्षा वगैरह मिलती है, नाम जप करना. जी. पहले मैं बैठ जाता था ऐसे ही, मतलब वो क्या कहते हैं जो हम करते हैं कीर्तन, वो नहीं करता था, प्रभात संगीत भी नहीं करता. अब भी जैसे मैंने कुछ टाइम हो गया, मतलब जैसे 2-3 महीने से प्रभात संगीत, फिर वो कीर्तन जो करते हैं हम, ललित मार्ग नृत्य वगैरह, वो करना शुरू करा. फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली मतलब काफी सारी रियलाइजेशंस होती हैं. अब पता नहीं, जैसे कुछ महीने से एक जो ट्यून सा, मतलब जिसमें जैसे चला नहीं जाता, जैसे हमारे कान में कई बार बीप सी बजती है, वो बजती है. मतलब वो अब पता नहीं, मतलब नॉर्मली बजने लग जाती है. मतलब जैसे कई बार मैं दिन में बैठा हूँ, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान दिया उस साइड को, कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे भी नहीं पता किसको क्वेश्चन करना है, क्या करना है, तो ये क्या क्या होता है. और अब जैसे मैं बाबा नाम केवलम जो हम करते हैं कीर्तन, तो अब हर दिन कोई ना कोई नई ट्यून आ जाती है, मतलब अपने आप ही. और अब मतलब उसको एंजॉय करता हूँ, मन लगता है. मतलब सुबह को अलग आ गई है, शाम को ही अलग आ गई है. वो कई बार सोचता हूँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ, मतलब तो वो, हाँ, ये मैं जो मतलब बताते थे पहले, मैं सीधा मेडिटेशन करने बैठ जाता था. और अब भी मतलब जैसे ये मतलब होता है, जैसे जो गाइडेड है तरीके, उस तरीके से जैसे जैसे चलना शुरू करा है, तो काफी अच्छा, मतलब खुद के में ही चेंजेस ये सारे महसूस होने शुरू हुए हैं. तो ये है. और बाकी मुझे मतलब यही लगता है कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी, पहले मैं सोचता होता था कि जैसे हम काफी सारे, मतलब मैं पहले ये सोचता था कि जैसे हम हर जगह पे कोई बोर्ड लगा दें, पॉजिटिव कोट्स लिख दें, उससे हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं. जैसे लोग अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे विचार आएंगे. और पर अब मतलब जैसे ये पता लगता है कि मेडिटेशन जो है, मतलब वो एक ही तरीका है जिससे हम, मतलब क्योंकि हमारे को खुद के अंदर ही झांकने की जरूरत है कि भाई, मतलब जैसे आज मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, पहले मैं मतलब जैसे होता था कि भी बाई चांस कोई पाकिस्तान का प्लेयर खेलता खेलता गिर गया है, तो मतलब मन में आ जाता था अच्छा हुआ ये गिर गया है. अब वो मतलब जैसे आज वैसे हुआ एक इंसिडेंट, तो अब वो ऐसा नहीं है क्योंकि सब मतलब है पाकिस्तान, मतलब चाहे वो, पर अब वो हो गया कि हाँ, मतलब सब कुछ एक ही है. हमारे को तो मतलब लेबलिंग कर दी गई है जाति के नाम पे, देशों के नाम पे. और मतलब हमको लोगों को जोड़ने की जरूरत है. शायद मतलब जो हमारी संस्था है, इसके थ्रू हमको अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है कि कैसे जोड़ा जाए. मतलब हमारी जो सिमिलैरिटीज है उनको फाइंड आउट कर रहे हैं,
लोग मतलब ढूंढ रहे हैं, मतलब तो हमें मतलब वो उनका मार्गदर्शन करने की जरूरत है। कुछ मतलब होता है ना, जैसे जो आप बता रहे थे कॉन्क्रीट, हमको मतलब वैसा बनना है। और मतलब लोगों को मतलब एक हमको खुद को ही चैलेंज बार बार चेक करना पड़ेगा कि कैसे हम कहीं गलत तो नहीं हो रहे, खुद को ही मतलब जैसे वो भी हमको चेक करना पड़ेगा और अच्छे से उनको गाइड कर सके सभी को। वो शायद मुझे लगता है, बाकी मैं भी लर्न कर रहा हूँ, इसलिए काफी कुछ सीखने को आप लोगों से मिल रहा है Thank you, Pankaj सभी। Babu. You are थैंक यू not दादा। only motivating, you are motivating us also. And like youths like you can only think innovative way how to go forward, how to make it more accessible and acceptable in society. And so even we should not never bother that we are new. Remember this word of Baba again. I have heard from some very seniors, most of you must be knowing. Baba used to say the good has come and the better are coming and best are yet to come. So you guys are those best generations which were not born when Baba gave this statement. So I'm very sure that coming generation like you guys can understand because there is no dogma. I mean, we are very open like anything. It's such a यस। so this is a beauty and society needs this today and society is open to accept. But we have to think how innovatively, how suitably we package this philosophy and place in the youth generation. Thank you very much. Be connected, राइट and दादा। I really like your statement every time you make. So may I तो request? हम मतलब मैं अच्छा सॉरी, एक बात बोलने लगा था। हाँ, मैं मतलब जैसे पहले तो मतलब सोचता था हाँ कि मतलब मैं अभी मतलब जैसे काफी सारे जो भी दिमाग में चैलेंज है, मतलब जो भी दुनिया की प्रॉब्लम है, और मतलब हम सभी ने मतलब अपने कंधों पे ली है जिम्मेवारी उनको सॉल्व करने की। पहले मैं सोचता था कि हाँ मतलब अब मुझे मतलब बस वो पता लग गया है कि मतलब डायरेक्शंस जो आती हैं ये मतलब थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि ये सब मतलब एक वो था, मतलब जैसे कोई मतलब हमारे को चला रहा है, भगवान चला रहे yeah, हैं मतलब हमारे को। beautiful. Yes. और वो साथ में है तो बस अब डरने की वही जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान चला रहे हैं, बस करते चलना है। और बाकी सब कुछ वो तभी हो रहा है, ये सब कुछ हुआ है। बस ठीक है दादा, बस नमस्कार। get connected जी with him as I told in the very हाँ beginning जी। whether you heard it. Baba says कि तुम सदा मेरे मुझसे बातें करो, मुझसे बता करके और पूछ कर ही कोई काम करो. If you can develop these sweet relations, you will see that एक हिंदी में कहावत है ना कि फिर तो क्या मतलब भूत जो है हल चलाता है वैसे लोगों का. तो वैसा हाँ जी। समाज बनाया जा सकता है. एंड एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ. बहुत लोग कहते हैं हाउ टू डू इट इज अ बाबा से स्टेटमेंट. बहुत लोग कहते हैं जी कि हमारे ऊपर परम पुरुष का ग्रेस नहीं है, औरों पे तो ग्रेस हो रहा है. बाबा इट इज वेरी सिंपल कि तुम यम नियम में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लो. तुम देखोगे कि उसकी कृपा वर्षा तुम्हारे ऊपर अनवरत हो रही है और तुम तभी भीगोगे उसके कृपा में. And that is the beauty of it. Why we should go elsewhere? We should learn from our masters. Thank you very much. So राइट may दादा। I request Dada Haranand Dada to conclude the session because time is also limited. Thank you very much. थैंक यू। इट वाज आज की चर्चा बहुत उपयोगी रही, और जिन लोगों ने अपने अनुभव बताए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा जैसे मीरा दीदी ने बताया या पूनम दीदी ने जो बताई बात, तो वो पॉजिटिव इमोशनल डेवलपमेंट की ही एक प्रक्रिया है। पॉजिटिव इमोशन में करेज एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है, जो बाबा ने इस पर बार बार जोर दिया है। प्रभात संगीत के गीतों में तो तंद्रा दाओ काटिए भीति दाओ शौरिये, आलोकेर पथ धोरिए धोरे साहसे जाइएगी, रोशनी का रास्ता पकड़ के मैं हिम्मत से आगे बढ़ सकूं, मेरी नींद को मेरी निद्रा को भंग कर दो और मेरे भय को दूर कर दो। तो संग्रामे वैपरीत्यम की जो बात कही गई है वो बहुत आवश्यक है। जैसे जो पूनम जी ने वाकया सुनाया, उसमें यही बात थी कि थोड़े से साहस की आवश्यकता थी जिसका उन्होंने प्रदर्शन किया, और तब उसी साहस के उसी हौसले को देखते हुए और लोगों ने भी अपनी दीवारों को तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तो एक व्यक्ति साहस करता है तो 100 लोग उसके साथ हो जाते हैं। यही पॉजिटिव इमोशन की जो बात है, यही पॉजिटिव इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशनल कंटेजियन जिसे कहते हैं, भावना की संक्रामकता। ये भावना जो है, जो दोनों तरह की भावनाएं दावानल की तरफ फैलती हैं, जीवन का ये सबका अनुभव रहा है कि देखिए, एक जहां पे एक सांप्रदायिक दंगा होता है तो एक घृणा की भावना फैलना शुरू करती है। एक छोटा सा पत्थर फेंका,
घृणा की भावना फैलकर दावानल की तरफ फैल गई और पूरे शहर को जला गई। तो उसी तरह एक सकारात्मक भावना भी उसी तरह फैलती है। बाबा ने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया है, वाइब्रेशन, फॉर्म एंड कलर के पहले पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि वाइब्रेशन इज अ व्हीकल ऑफ एनर्जी। ये जो वाइब्रेशन जिससे हम सारी चीज बाहर परिवेश के की संवेदनाओं को महसूस करते हैं नर्व फाइबर्स और नर्व सेल्स के द्वारा, और कॉग्निटिव उसका रिस्पॉन्स अपने आप तय करते हैं, तो उसमें एक एनर्जी होती है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने भी पढ़ा था पहली बार, तो इसको ये पॉइंट मुझे सीखने को मिला था कि वाइब्रेशन भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम में जा रही है। स्टिमुलस जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसीलिए वो एनर्जी जनरेट करेगा। तो जब नेगेटिव एनर्जी अंदर जाएगी तो वो नेगेटिविटी जनरेट करेगी। ये दोनों घटनाएं जो मीरा दीदी ने कही या अभी पंकज जी जो बयान कर रहे थे, तो यही होता है कि एक प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन चलता रहता है। प्रोसेस ऑफ, जो बाबा ने अपने जो पहला जो स्पीच है एज प्रेसिडेंट ऑफ रिनासा यूनिवर्सल मेड इन February 1955 एट भागलपुर, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि एवरी पर्सन हैज अ पोटेंशियल फॉर प्योरिटी। और यहाँ जो प्योरिटी शब्द है मेरी दृष्टि में ये पॉजिटिव इमोशंस की ओर संकेत करता। और भक्ति तो है ही, जो दिलीप दादा ने बहुत अच्छी बात कही कि भक्ति जो है वो भावना का ही एक शुद्ध सात्विक स्वरूप है। और जब भावना जब स्थायी रूप से ईश्वर के प्रेम में परिणत हो जाती है तो उसी का नाम भक्ति है। भक्ति कुछ और नहीं, ईश्वर का प्रेम ही है। उसके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि आसक्ति से उसको अलग करना था, तो एक लिंग्विस्टिक हाउसकीपिंग के लिए किया गया। अब मैं हाउसकीपिंग शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया कि अभी बहुत सारे लोगों ने जो बात कही वो एक मेंटल हाउसकीपिंग का ही प्रयास चल रहा है। ये सारा कुछ जो आज का डिस्कशन है कि क्या हम अपने मन के भीतर जिन भावनाओं को संग्रहालय में रखे हुए हैं उनकी प्रॉपर हाउसकीपिंग हुई है? क्या हमने देखा है कि जिस कमरे का तौलिया और बिस्तर बदला जाना है उसको सुबह बदला गया है कि नहीं? जो हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं, हर व्यक्ति अगर अपने अंदर झांके, जो कि पाइथागोरस कहता था बार बार इस बात को कि शाम में अपने को रिव्यू करो कि क्या क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ और क्या गलत हो गया। तो ये जो है इंटरनल हाउसकीपिंग की प्रक्रिया है कि कौन सी चादर आज मेरे दिमाग में गंदी पड़ी है उसको बदलना है, कौन से कूड़ादान जब भरा पड़ा है उसको फेंकना है बाहर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हाउसकीपिंग, जो कि साधना भी है। वो शुरुआत के पहले जो ये सब जो शुद्धि का की प्रक्रिया है वो मेरी दृष्टि में हाउसकीपिंग की एक प्रक्रिया है कि जो कचरा है उसको पहले हटाओ, तब अच्छी अच्छी हवा, स्वस्थ हवा आएगी। वरना गुलाब के फूलों से आती हुई हवा भी अगर कमरे में गोबर भरा हुआ है तो गोबर मिश्रित गुलाब की खुशबू आएगी। तो इसलिए गोबर को तो बाहर करना ही पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ी बात है आनमार की सोच में, जो राजेंद्र दादा ने अभी बहुत सही बात कही कि हम लोग की सोच जो है उन्मुक्त सोच है। मुक्तांगन जो शब्द का प्रयोग किया बाबा ने, वो सोच है कि हम लोग खुले मैदान में जीना चाहते हैं और सबके साथ जीना चाहते हैं। इसीलिए हाउसकीपिंग ये करनी पड़ेगी। और ये डॉगमा जो है, जो सारी ये इसीलिए जमे पड़े हैं, भर गए हैं कि अभी तक सदियों से कल्चरल हाउसकीपिंग नहीं हुई है। हम लोगों ने सवाल नहीं उठाया कि कौन सी बिस्तर बदलना है, कौन सा कमरे में झाड़ू पड़ा है कि नहीं, ग्लास जूठा पड़ा है। तो ये सारा ग्लास, चादर, कूड़ादान, ये सब कमरे में बड़ा पड़ा है। ये डॉगमा वही है। एक और चीज जो बाबा ने बहुत सतर्क किया न्यूह्यूमनिज्म में इमोशंस के बारे में बोलते हुए, ही यूज्ड ए टर्म स्यूडो ह्यूमनिस्टिक स्ट्रेटेजी, और कहा स्यूडो ह्यूमनिस्टिक सेंटिमेंटल स्ट्रेटेजी उन्होंने कहा। और इशारा क्या किया कि जहां एक तरफ न्यूह्यूमनिज्म में हम कहते हैं कि इट इज द कल्ट ऑफ लव, में कि सावधान रहो, कोई आदमी इस भावना को एक स्ट्रेटेजी बना के तुमको बेवकूफ बनाता है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह लोगों ने बेवकूफ बनाया। और रिटोरिक्स में, भावना में अच्छा वक्ता हो हिटलर की तरह, तो हिटलर बहुत ही लोकप्रिय वक्ता थे, तो वो सच को झूठ, झूठ को सच बदलने की ताकत ये भावना रखती है। इसलिए उससे भी सतर्क रहना है
कि किसी की भावना के आगोश में हम बह तो नहीं चले जा रहे हैं कि बाढ़ आई उसी में बह गए, जो अक्सर होता है जब समाज में, जिसको दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा, पर्सपेक्टिव ऑफ द हर्ड, बड़ा अच्छा शब्द किया, पर्सपेक्टिव ऑफ द हर्ड। हम भीड़ मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। वो भीड़ मानसिकता क्या है? एक भावना है, घृणा की, नफरत की। अगर उसी तरह प्यार की भावना भी फैल जाए तो पूरी एक कॉस्मिक सोसाइटी बन जाए और प्यार के आधार पर एक पूरा समाज बन जाए। पूरी कोशिश जो है, ये सारे जो कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों की वही कोशिश है कि हम ये हाउसकीपिंग को ठीक करें और हर व्यक्ति की जो मूल पवित्रता है उसको सामने लाएं। गंदी चादर जो बिस्तर में बिछी है उसको उठा के फेंकें, उसको ड्राई क्लीन करें या तो नई चादर डालें और फिर आगे बढ़ें। हम लोग सब उसी दिशा में प्रयासरत हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सबकी बात सुन के। सब अपने अपने ढंग से प्रयासरत हैं और पंकज जी का प्रयास तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं भी कभी इस प्रक्रिया से गुजरा हूं कि लगता है कोई उंगली पकड़ के मुझे बोल रहा है कि नहीं इधर से चलो, बाएं से चलो, दाहिने से चलो। मैं अक्सर इस बात को अपने घर में चर्चा करता हूँ। घर में तो दो ही प्राणी है, मैं और मेरी इकलौती धर्मपत्नी। तो मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि उंगली पकड़ के कैसे बाबा चलाते हैं। और आचार्य जी जो मेरे फादर इन लॉ थे, आचार्य रामतनुदा, वो इस बात को बराबर कहते थे कि अगर बाबा के मिशन के बारे में काम करना तो दूर, सोचना भी आप शुरू कर दीजिए और एक सकारात्मक पहल करिए। तो जो जैसा मीरा जी ने कहा, तो वही मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू। Thank you, Dada. Thank you very much. This session was also kind of housekeeping in our proud forum, that people have to elevate, because that is the base. Spirituality is the base. So that is why such session at least once in a month or two is required. So thank you very much, Dada, for taking initiative to, it is your subject for the discussion today it was. And thank you everyone to contribute so much in a very positive manner. And Dada rightly said, we have to do housekeeping and never forget that our capability, because we are a spiritualist, our capacity will be much more than any problem to solve it. So we have to solve many problems of society, and we are for that. Thank you very much, Dada. Thank you. Namaskar. See you all next Saturday. Thank you. Thank you.